बंधुगण मु डॉक्टर संतोष कुमार महापात्र आपण मानकु स्वागत जनाऊँच आमर साप्ताहिक कार्यक्रम हेल्थ कनेक्ट को। बंधुगण वन रो मीट मार्केट गोटे भाइरस बाहरी सारा पृथ्वी रे एमिति प्रलय मचाई चली कि आमे माने उबुटुबु होचु सेही जंत्रणा रे। लौह दानवर रक्त भोजी भलिया एई वन भाइरस लोकंक जीवन सहित खेली चलची। कि दिन कि राति कि सहर कि गाँ कोरोना रो ये उत्पाद दिन को दिन रेकर्ड भांगिबारे लगी। 46 लाख केस आ 77,000 डेथ परे भी आम देश रे यार विभीषिका कौन सी दृष्टि कमिबा मु जानी पारु नहीं। हॉस्पिटल मानकर बेड रो अभाव हेबा आरंभ हेलानी। एही समय रे आपण मानक मन रे बहुत गुड़िए प्रश्न आसुथबो निश्चय। आउ आज मु जेमती गत सप्ताह रे आपण मानकु कहितली जे एही सप्ताहटा आमे डेडिकेट करबा कोरोना पई। आज आम सहित सही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा पई जने सुपर एक्सपर्ट अछंती जे गत 6 मास मध्य रे 5,000 रु अधिका कोरोना रोगी को ठीक करी मृत्यु मुखरु बंचई फेराई आनी सारी छंती। तांको आमे लिटरली किडनैप करके नहीं आसीजु एपोलो हैदराबाद रु आउ आमर ई पश्चिम ओडिशार लोकंक सेवा करिया पई से एबे आम सहित समर्पित। आसंतु आमे समस्ते मिसी वेलकम करिवा डॉक्टर प्रवीर राय एचओडी क्रिटिकल केयर। सर वेलकम टू द शो। किछि भी डिस्कशन को जीवा पूर्व सर मु गोटे जिंस जानिबा को चाहिबी जोटे समस्ते एते भयभीत आपण कोन डर लागुनी? मु कोरोना संगे विगत 6 मास धरी एप्रिल रु मार्च एप्रिल रु मोर फर्स्ट ड्यूटी पड़थिला। से प्रथम थर ड्यूटी कला बेलू मते टिके भय लागिथिला किंतु तापरे मु जेतले प्रथम थर ड्यूटी कली 15-20 दिन ड्यूटी कली तापरे लागिला जे नाही ए टाइम टा मनीष तो माने हमर डॉक्टर हिसाब रे आम मानकर दरकार जे आमे मनीष मानको हमर जो फेलो फीलिंग अछंती सिटीजन अछंती तांको किछि करी की रिटर्न देवा पई एटा होछि बेस्ट टाइम आम मानक पई। सो एथरू आमे एज ए डॉक्टर प्रोफेशन स्पेशली आमे जो क्रिटिकल केयर रे अछु सो एई टाइम टाको आमे जदी घर भीतर नुची के आमे रहिबा दैट इज वेरी अनफेयर आम मानको जो सोसाइटी पाठ पढे की डॉक्टर बनाया पई जो करचंती। तो सेहिते पई आमे बाहरी पड़छु आ एटा केवल मो संगे जत्ते मोर क्रिटिकल केयर मेडिसिन पल्मोलॉजी जत्ते फ्रेंड्स अछंती समस्ते मध्य एई पर्टिकुलर ईयर जिंस रे सब एकदम जंप करके करूछंती सब जगह रे समस्ते करूछंती। सतरे माने जो समय रे माने गोटे कोविड रोगी को गाँव रे भी जदि बाहरी गला ताको सोशली आउटकास्ट कर दउछंती लोक तांको पाख को जाउ नांती। किंतु भाबंतु गोटे मनीष 60टा क्रिटिकल इल कोविड पेशेंट को पाखरे सोई दिन राति सेवा करिवा काम करिवा वेंटिलेटर रे दबा मेडिसिन दबा एडवाइस दबा आउ 60 जनक लोक घर लोकंक सहित काउंसलिंग करिवा सतरे सर बहुत टीडियस जॉब। आउ सर आपण तो माने लेविज लाइफस्टाइल रे हैदराबाद एपोलो रे थिले। हाँ आमे आपन को तो बहुत बाध्य कलु आसिया पे काहे कि ना माने पश्चिम ओडिसा कोन कहबी माने एते हेल्थ ग्राउंड रे एते कमजोर थिला जे ए जयप्रकाश हॉस्पिटल परिकल्पना भी तार गोटे सॉल्यूशन किंतु आपण आसीबा द्वारा हमर शक्ति बहुत गुण रे बढ़ी जाईची। तो किंतु सर आपण काहे कि राउरकेला आसीबा पई राजी हेली एते बढ़िया माने लाइफस्टाइल आ जगह छाड़ी की? मु सर्वप्रथम कहे पाई चाहे जे मु आज जहाँ भी हेची सेटा ए राउरकेला पई मु राउरकेला रो गोटे छोटो पिला मु एठी मोर जन्म एवं मु स्कूल रे एठी पढ़िछि मु एठी बढ़िछि एई सब जो जगह गुडा आपण देखछन्ते आज सेई जगह रे ही मोर चाइल्डहुड मोर बचपन एगुड़ा सब बीतीछि एठी। तेणु एई पर्टिकुलर टाइम जेतले मनुष्यता पई मु जो कहली कोविड रे गोटे इट इज अ रियल चैलेंज समस्त को पई एटा गोटे रियल चैलेंज आउ एथिरे आपणकर एक्जिस्टेंस आपण नेक्स्ट सेंचुरी के 2021 को देखिबे ना न देखिबे इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एवरीबॉडी। तो सेति में एई टाइम रे जेतले हमर निजर लोक जो माने मते आज बड़ करचंदी तांको प्रति यदि मु यदि किछि न करिवि ताले आई थिंक आई विल बी बिट्रेइंग माय ओन मदरलैंड। सो ए मदरलैंड रो कॉल पाई ही मु एई टाइम रे एठी आछि आ मु आशा करे जे मु जो एठी रहिबी से दिन रे मु आपण मानकर किछि भलो करि परिबी। बहुत बढ़िया सर। आउ समस्त डाक्टर समाज पई मध्य सर माने एटा गोटे युद्ध भलिया एग्जैक्ट आपण आमे सब बेले एप्रिशिएट करथाओ जे बॉर्डर रे जो सैनिक माने युद्ध करचंती से माने जानि थांती जे तांको छाती रे गोली बाजी पारे आउ से माने लड़ंती सेति पई तांको सम्मान आउ
किंतु एबे एबे डाक्तर समाज बा जो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर अछंती जहाँ को हमें कोविड योद्धा को पुलिस इंक्लूडिंग ऑल जो माने एई अछंती से माने सामने शत्रु को देखी पारु नाहंती ଆଜ୍ଞା शत्रु को देखी पारु नाहंती माने आमे किए इन्फेक्टेड किए नुआ आउ एमती गोटे रोग जोटा अवश्य भावी माने मु भावुनी जे किए न हे कि सर पार हे जीवो हुए तो किए किछि लोक एसिम्प्टोमेटिक रही थाई पारंती किछि लोक माइल्ड सिम्पटम रे पार हे पारंती किंतु एमती हबनी जे आपण को कोरोना हबो नाही जदि आपण ए पीरियड टा पार हे जानती तेबे आर्टिफिशियल आपण को कोरोना करेबा को पड़िबो नहले आपण को से बॉडी रे रेजिस्टेंस टा आसीबनी किंतु सर भाइरस तो आमे सर बहुत दिन रो डील करि आसु आउ माने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ला बेले हो बा वायरल ट्रीटमेंट सब बेले करि आसु किंतु एई भाइरस टा कोन माने यार कोन एते स्पेशल अछि जे माने एमिति तांडव चले जी सो सर्वप्रथम होची एई जो कोरोना भाइरस तार ना आपण माने समस्त जाइतंती याकू कहउचंती नोवेल कोरोना भाइरस नोवेल माने एटा मनुष्य पाई एटा मनुष्यता पाई एटा गोटे प्रथम थर एई भलिया गोटे भाइरस केबे आसीची माने आमे तार सम्मुखीन हेइछु तो सेति पाई एई पर्टिकुलर भाइरस प्रति हमर जो ह्यूमन बॉडी रो जो मेकअप अछि सेतिरे हमर जीरो इम्यूनिटी आज रहिछि आज डेट रे रहिछि तेणु सेई पर्टिकुलर इये रे आम सेई पर्टिकुलर फर्स्ट कारण पाई हमर एई भाइरस प्रति हमर कोनसी इम्यूनिटी नाही आउ सेति पाई हमको जेतेबेले भी जहा को इफेक्ट करूछि बहुत बैडली सेटा इफेक्ट करूछि सेकंड होछि से भाइरस रो जो इनक्यूबेशन पीरियड टा बहुत अधिका माने लोक जानी पार नांती जे केते टाइम रे से तांको इन्फेक्ट करि पकोउछंती बा तांको से इन्फेक्ट अन्य लोकन को करिवे बा तांकर हेइछि ना नाही सेटा भी जानी पारना तृतीय होछि सेटा हमर देह भितर बसिकी आम सेल भितर जाईकी से गोटे आम सेल गुडा को हाईजैक करदेला भलिया से करूछि तो हाईजैक कर देकी सी हमको टोटली माने हमर सेल गुडा को डिक्टेट करूछि तार तार कथा अनुसार ताको जीवा पई तो सेति पई एई पर्टिकुलर भाइरस टा एते तांडव करूछि पूरा पृथ्वी रे आ गोटे जिंस होछि बहुत गुडा हमर जो आगर जो भाइरस थिला सेथिरे लोकंकर माने एटा गरम दिन रे बेसी हबो ठंडा रे बेसी हबो ट्रॉपिकल कंट्रीज रे बेसी हबो बा अन्य जगह रे कोरोना भाइरस इज यूबिक्विटस माने पूरा पृथ्वी रे कोनोसी जगह नहीं ठंडा गरम इक्वेटर नॉन इक्वेटर ट्रॉपिकल सब सहारा डेजर्ट कौनसी एमितिया जगह नहीं जोठी की कोरोना भाइरस रो इन्फेक्शन नहीं तो ए भाइरस रो जो एडेप्टेबिलिटी टू नेचर सेटा बहुत बहुत हाई तो सेई जोगु ए भाइरस टी सब जगह रे प्रचलित हो जाउची आ पूरा पृथ्वी को पूरा कंकर कर देई सर माने एमती लागुनी कि माने एटा माने जणे जेमती स्पेशली डिजाइन करिकी तैयार करिकी माने बम फटेला भलिया छाड़ी देजी जेबेटेरु आसिलानी समस्त मन रे गोटे प्रश्न इज इट ए बायोलॉजिकल वारफेयर वेपन कि चाइना एंती किछि करिछि कि ऑल्दो इट इज अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट सर किंतु आपन को ओपिनियन टा कोन जानिबा को सी इट इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल देयर हैव बीन सो मेनी पीपल जो माने भाइरस रो एक्सपर्ट्स से माने कहछन देयर इज वन ग्रुप व्हिच सेज दैट यस इट डज नॉट इफ यू आपन जदी ताको देखिबे इफ यू लुक एट इट इन द प्लेन आईज फ्रॉम द प्लेन पर्सन you can see that yes the virus has been created in such a way that it can exist in all kind of a situations माने जोठी ठंडा हो गरम हो तापरे जो कोनोसी जेनेटिक मेकअप आपनकर हो सेते रही परिबो तो there are definitely many clues which lead to the fact that this is probably a created one but still there are so many other scientists who are so much established in their own fields they do not agree to that so I do not think at this particular moment until we have more proof we can say that it is a biowarfare which has been imposed on mankind. As any other viral fever, sir, it is presenting with fever, cough. So, what are the various type of presentation you are seeing among the patient which you are receiving? See, most of the patient, maybe 80% of the patient, let me tell you, they may be just asymptomatic. Asymptomatic माने तांकर कोनोसी symptom नथिवो से जानि भी परिबेनी जे तांकर कोरोना हेछि आउ से सेही भलिया कोरोना भाइरस को नेकी से माने संक्रमित अन्य लोगों को संक्रमित करथुए so this asymptomatic carrier is one of the most commonest maybe more than 80% of the people who are presenting like that the rest 20% तांकर majority symptoms होची हमरो common virus भलिया जेमति हमरो fever रे हुए fever virus ये रे body ache myalgia headache बेले टिके नाकरू पानी बहिबा एई टाइप रो जिंस सब common symptom but कोरोना भाइरस रो सबटु डेंजर होची जे इट कैन प्रेजेंट इन वेरी वेरी अनकॉमन थिंग्स लोकों को डायरिया है कि बहुत लोगों को ऐसी
केते लोक स्ट्रोक प्रेजेंट करछन्ती तांकर गोटे पक्षाघात है कि से माने कैजुअलिटी आछन्ती तांको जदी ये करा हबो ताले सेतिरे से देखुछन्ती जे तांकर आमे देखिछु कोरोना टेस्ट करिकि तांको स्ट्रोक परे भी से पॉजिटिव हेछन्ती ता छडा हार्ट अटैक भी वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन तांकर सो आमे देखिछु जे गोटे गोटे पेशेंट से माने केवल चेस्ट पेन नै कि ईसीजी चेंजेस है कि तांकर हार्ट अटैक हेछि बा तांकर सब हार्ट रो जो ये गुडा अछि सेगुडा कमी जाइछि हार्ट रेट कमी जाइछि किंतु तांकर कोरोना हेछि so यार manifestation of the coronavirus is very very profound it is very you have to have a high degree of suspicion to suspect that a person is having coronavirus माने कोरोना तेरे कितने रंग नहीं सर yes माने केमती प्रेजेंट करूची केमती आसुची केमती माने लोकंक भितर माने जिज्ञासा प्रचुर माने आउ मु भाबुची बहुत लोक तो भाबुचंदी इट इज अ स्कैम माने आपण विश्वास करिवनी सर एबे जस्ट आवर प्रोग्राम स्टार्ट हेची आउ बहुत लोग लाइव अच्छा बहुत लोग कमेंट कर इट इज ए स्कैम तो सर क्वेश्चन फर्स्ट जीवा इज इट रियली ए स्कैम माने भावନ୍ତୁ जदि गोटे स्कैम होता पूरा पृथ्वी लोक बेड़ा माने से माने किछि जानि नंती those who think it is a scam please come to me I will show you I will give you live videos of my from my ICU where you will find that people are dying how drastically people are dying how pitifully people are dying I really as a person who has treated corona for the last 6 months ମୁଁ ଏତିକି ଟିକେ wish करे ଯେ God even my enemy should not get corona because once you are a corona you just can't imagine how dangerous and how bad it is first of all you are ostracized from the society ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ society को ଆପଣଙ୍କ family को पूरा ostracize करदो ଆପଣଙ୍କୁ दूर दूरे तापर आपण हॉस्पिटल रे आसिले ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି you are coming to the hospital bed ଆପଣଙ୍କ संगे कोनसी अटेंडेंट मिसी परिबनी डॉक्टर ଆପଣଙ୍କ पाखरे डायरेक्ट जाई परिबनी से पूरा पीपी पिंदी की जीवो से दिन को दिथर बा थर जीवो so you are सेथरे भी आपण socially secluded तापर आपण जदि आईसीयू रे रहिले there are so many things that it which cannot be done to a corona patient जोटा कि हमें normal आईसीयू रे जंती करि पारू and the worst part is if god forbid if you die because of corona you are not going to get a particular funeral your own people आपनको निज लोक जाई कि आपनको ग्रेवयार्ड रे दफन करि परिबेनी ना आपनको मुखाग्नि करि परिबे आपनको सरकारी लोक माने करिवे so please don't what I would say brand it as a scam or anything like that people have been during the first part of the episode of the particular part of the have been dying like ants बड़ बड़ कंट्री रे जोठी आमे यूरोप रे आमे जाई कि आमे ट्रेनिंग पई आमे जाउतलु सेही सब कंट्री रे इटली फिटली सेही सब कंट्री रे लोक माने पिंपुड़ी भलिया मरचंती and there were no graveyards आपण माने वीडियो देखचंती the same things happened when the first phase of it happened but I am very thankful that Orissa is getting the peak in the later half when we have got more experience माने मु जंती मोर जो विगत 6 मासर जो एक्सपीरियंस अछि सेटा मो पाखरे सेही अनुभूति अछि और सेहितरे मु बेटर ट्रीट करबा पई आजी इक्विप सेटा मते लागे तो मो हाथ रे आगे जो मोर्टालिटी होतला माने जेते लोक मरुथिले मो दर रे definitely it has decreased because I have tried to gain much more knowledge and give better service to my patients so please it is not a scam and we as healthcare workers and doctors we are putting ourselves at risk mane the risk that we have every day our family thinks that don't know kal mere papa ko mo jio bhabuthibo kali mo papa ko jodi corona he gala se ji mori gele mu kon karibi so what is that to me but we have to do it eta juddha gote soldier jodi कहबो mu juddha karibini mu soldier काहे की हेथि काहे की so देवाशीष भाई आपण पूरा नेल इन द कॉफिन बढ़े ह्यूज स्कैम कही आपण प्रश्न आम प्रथम उत्तर देलु तो भावुची आपण प्रश्न उत्तर पाई माने स्कैम आपण कहा को कहउचंती कोरोना वायरस को ना तार टैकल करबा को आपण बहुत भाग्यवान जे आपण आज बसे कि फेसबुक रे आंसर दे पारुचंती जदि स्कैम के करि थांता 3 मास आगरु कि 6 मास आगरु आपण आज एटी बसिकी देखु ना को हॉस्पिटल रे भर्ती होता बा को ग्रेवयार्ड रे थांती थैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जो माने अर्ली स्टेप नेले बोली एबे आपन को लागु कि स्कैम नहले आपन जदे मरिवा देखि थांती लोकन को 100 लोक 1000 लोक गली लोक मरिवा देखि थांते आपन को स्कैम लागी न थांता तो सर माने हमको सत कथा स्कैम कहीं लगुच ना कोविड पेसेंट पॉजिटिव है घरे रही भल हो जाए कि सर आप लोक बुझे दिंतु जे क्या होम आइसोलेशन एडवाइस करा कौन क्राइटेरिया देखिकी क्या सरकार बा गवर्नमेंट बा हॉस्पिटल बा डॉक्टर
एडवाइस କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଘରେ ରୁହ। ଆଉ ସେ ଘରେ ରହିବା ସମୟରେ ସାର୍ କି ମାନେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତ ଟିକେ ମାନେ करेक्ट। मैंने तो पहले ही आपको बता दिया था ମୁଁ ଟିକେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି ମୋର ସବୁ ବହୁତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହିନ୍ଦୀରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ we are ଚାହୁଁଛନ୍ତି। multi linguistic sir, Sure, language sure. ର କିଛି I barrier can ନାହିଁ। I can and as we are catering this part of Odisha, sure. ହିନ୍ଦୀ ଓଡିଆ So ସବୁ ଅଛି ଏଠି। so हिंदी आई थिंक मोर सब बंधुगण माने सुनी पाए बुझी पारिबे। देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि 80% लोग इस बीमारी में एसिम्टोमेटिक यानी कि उनको किसी तरह का कोई लक्षण रहेंगे। तो अगर आपको कोरोना पॉजिटिव हो गया और आप इस कैटेगरी में रहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं होगा और आप घर में बैठ के आप इसको बोलते हैं अरे यार ये तो तमाशा है, ये तो डॉक्टर लोगों का तमाशा है, हॉस्पिटल का तमाशा है, तो ये स्कैम है। करेक्ट। आप भाग्यवान हैं, आपके ऊपर आपके शरीर में भगवान ने इम्यूनिटी दिया है, 80% लोगों में आप आते हैं तो आप बच गए, चलिए। लेकिन ये जो बाकी के 20% जो हमारे भाई बहन जो हैं जिनको कोरोना इन्फेक्ट करता है वो किस तरह से कुत्ते की मौत मरते हैं और किस तरह से सांस के लिए हाफते हैं, अगर आप एक बार आईसीयू में आके देखें तो आपको पता चलेगा। लोगों को बिल्कुल सांस नहीं पुराता है, उनको लगता है कि हर वक्त उनके गले में कोई फंदा लगा के उनको दबा रहा है। तो और ऊपर से हम और इस वक्त हमको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को अगर मान लीजिए आपको कोरोना पॉजिटिव हुआ लेकिन आपको कोई किसी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं है तो आप आराम से अपने होम क्वारंटाइन, जिसके बारे में भारत सरकार ने बहुत सारे ये अपने गाइडलाइंस प्रचलित किए हैं, तो आप उनके आधार पे आप अपने घर में रह सकते हो। लेकिन आप कब हॉस्पिटल आए, जब भी आपको लगे कि आपका फीवर कम नहीं हो रहा हो या आपको दूसरे कोई सिम्टम्स हो जैसे डायरिया हो रहा हो या कोई आपके कोई वीकनेस लग रहा हो किसी साइड में या चेस्ट पेन हो। नहीं तो सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपका सांस फूलने लगे और आपको लगे कि नहीं मैं और सांस नहीं ले पा रहा हूं, इस तरह के कंडीशन में आप तुरंत एकदम फटाफट आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल या हेल्थ केयर वर्कर के पास आप जरूर इसको आ जाइए। लेकिन मैं एक बात आपको सचेत कर देना चाहता हूं, आप आखिर तक मत रुकिए अपने घर में कि आपका सिम्टम बढ़ेगा तो मैं जाऊंगा, नहीं तो अगर मैं जाऊंगा हॉस्पिटल तो ये सब हमें लूट लेंगे, ये धारणा रख के आप अपने घर में मत बैठिए। सिम्टम शुरू होने से कुछ पहले ही अगर आप आ जाते हैं तो हम उसका आपको कुछ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पहली बात है, ये जितने हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कोरोना के बारे में उसमें एक चीज बहुत बहुत अहम रखती है कि ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना ही बेनिफिशियल है। आप अगर मरने वाले को वो 50,000 का 1 लाख का टोसिलिजुमैब भी दोगे तो उसमें वो दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो बंदा पहले से जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उसको अगर दें तब उसको वापस आने में चांसेस ज्यादा है। नहीं एक्चुअली सर और थोड़ा मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब भी आप होम आइसोलेशन में हैं, आपको डॉक्टर ने बोला है कि घर में रहिए, तो आप प्लीज बी इन कांटेक्ट विथ योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। आप हॉस्पिटल के साथ कांटेक्ट में रहिए, डॉक्टर के साथ कांटेक्ट में रहिए, कोई एम्बुलेंस का कांटेक्ट में रहिए या नंबर लेके रखिए ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आए आप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच सके। मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है सर, जब अभी इतना हचपच चल रहा है, मानो किसी को सिम्टम्स चालू होता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए डिले होता है या एम्बुलेंस आने में डिले होता है, तो कोई ऐसा तरीका है जो घर में वो कर सके ताकि उसको थोड़ा सा ब्रीदिंग के लिए आसानी हो और थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कुछ टाइम मिले? करेक्ट। सो इसमें देखिए कुछ चीजें हैं। पहले तो आपको सिम्टम होने से पहले, आप घर से निकलने से पहले ऐसा ना हो कि आप दर दर भटके, तो आप पहले अपने हॉस्पिटल से कांटेक्ट कीजिए, आपके हेल्थ केयर वर्कर्स या आपके डॉक्टर जो ट्रीटिंग फिजिशियन उनसे कांटेक्ट करिए किस बेड, क्योंकि अभी कोरोना के हॉस्पिटल्स में बेड की बहुत किल्लत होने वाली है, लोगों को बेड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये हम इस फेज में पास कर चुके हैं हैदराबाद, दिल्ली, बॉम्बे, इन जगहों में। तो पहला है कि आप हॉस्पिटल को कांटेक्ट कर लीजिए और किसके पास बेड वैकेंसी है कंफर्म वो वहीं डायरेक्ट जाइए, जबकि बल्कि आप दर दर भटके और दूसरे हल। दूसरा चीज है, जब तक आपका हॉस्पिटल नहीं हो तो एक चीज देखा गया है कि अगर ये कोरोना के जो पेशेंट हैं वो अगर अपने पेट के बल पलटी मार के अगर सो जाएं, जिसको बोलते हैं हम प्रोन वेंटिलेशन, जैसे आप देखते हैं छोटे बच्चे लोग जब उनको सर्दी खांसी हो तो वो अपने पेट के बल सो जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स का जो पोर्शन है, जो पीछे वाला पोर्शन है, वो ऊपर हो जाने से उसमें अच्छा ब्रीदिंग एस्पिरेशन होता है और इसी में आपको कुछ देर के लिए आपको कुछ देर अच्छा ऑक्सीजन मिल सकता है और आप कुछ देर तक बचे रह सकते हो, आपका जो सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उससे आप बच सकते हो। ये दोनों एडवाइस मेरी तरफ से। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो
मैं एक एक करके उनका जवाब देना चाहूँगा, और ये जो डिस्कशन है उसको एक डायरेक्शन में लेके जाऊंगा, तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। खुशबू मैडम थोड़ा सा ऑफेंस फील किए हैं, लेकिन मैडम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट आप अपना हमारे भावनाओं को समझिए। ये एक डॉक्टर का दर्द है, लोगों का मौत देख के दर्द है। सर आपण सत कहतु, आपण तो हजार हजार लोक को बंचेइछंती, किंतु जेते डेथ लास्ट 6 मास रे देखिथिए, मते लागुनी आपण जीवन सारा जीवन भितरे सबो मिसे के एते देखिथिबे। करेक्ट। मु जो ये लास्ट 6 मास रे जो डेथ देखिथिली, सेठी माने एते बहु मात्रा रे सेम डिजीज रे लोक जो मरिबे, एटा मु केबे लाइफ रे इमेजिन करनथली। या आगरो मोर गोटे लाइफ रे हेतिला, मु जेतले कटक मेडिकल रे पढथली सेते बेलते गोटे अल्कोहल रो गोटे ट्रेजेडी हेतिला, लिकर ट्रेजेडी हेतिला। सेटा परे मु ए जो कोरोना रो डेथ देखली, सो दिस इज एक्चुअली मोर सेइथरे कोन ना 3 दिन भितरे सब लोक मरि जाइथिले, किंतु एथरे लोक मरुचंती मास मास चलची आ एबे जाय भी चलची। तो सेइथि पई आई डोंट थिंक दैट इट इज अ वेरी, आई हैव नॉट सीन सो मेनी डेथ्स इवन इन द वार। आई वाज इन द आर्म्ड फोर्सेस, आई हैव सर्व्ड इन द आर्मी, बट आई हैव नॉट सीन सो मेनी डेथ्स एट द सेम टाइम। एते डेथ कोनोसी डॉक्टर देखे आमे माने भाबंतु केते मात्रा रे ये हेतिबो मर्माहत हो जो कि आमे आ मरिबा को डरुनु। सर एबे जो माने कोविड वार्ड रे बा कोविड पेशेंट को पर नॉर्मल भी पेशेंट देखुचंती, से माने जानुचंती जे सामना रे जे आस्ती ही और सी मे ब्रिंग डेथ टू मी, बट आई डोंट केयर। काहे कि ना मु जदी जनक पई डरी जीवी, बहुत लोगों को तार पे माने देह देबा को पड़िबो। तो सेति पई वी आर केयरफुल, बट वी डेयर टू ट्रीट यू। ज्योति मैडम पचारुचंती कि सेल एवरीवन कंसीडर नॉर्मल फ्लू एज कोविड सिम्पटम्स एंड टेस्ट देमसेल्फ। During when the epidemic is there, then it is very difficult to say, because it is happening. You are having just symptoms of a very very normal flu, but if it lasts for more than 1 day or 2 days, and the moment it is better to get tested, because apanko symptom, by the time it comes to you, you are already 4 to 5 days into the disease, and you might have spread it to a few other people in whose proximity you are. So the quicker you get tested, the better for you, so that you are aware that you are COVID positive or negative. And it is also better for everybody else, so that you can isolate yourself and you don't spread the disease, because that is our basic social responsibility. राजेश मिश्र सर भी एमती गोटे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पचार, किंतु ता उत्तर मु देवा को चाहिए। व्हाई पीपल अफ्रेड ऑफ गेटिंग एडमिटेड इन जेपीएच? सर एबे गोटे हॉस्पिटल ना नियंतु जोटी एडमिट हमें लोक खुशी हुंती, तोटी के खुशी रे एडमिट हुएनी, शरीर दरकार करे तापर जाके एडमिट होंदी। आ एबे कोविड टाइम रे समस्त को डर लागुची, डाक्टर को डर लागुतो हॉस्पिटल जीवा पे, पेशेंट माने तो डरिबे ही। तो अब बाबूजी आपण क्वेश्चन उत्तर पाई जाइथिबे। आ देवाशीष राउत से पचारछंती, हाउ कैन ए कोविड पॉजिटिव पेशेंट इज ट्रीटेड इन 5 to 6 days? सर बहुत गुडे मिथ अछि, आमे मु किछटा क्वेश्चन फ्रेम करिछि कोविड विषय रे, बहुत मिथ अछि लोकंकर। तो ताकू मिथ बस्टर करिके आमे गुटे रैपिड फायर राउंड करिबा सर। आकू आपण माने कंटिन्यूअसली हम सहित जोड़ी थांतु, तो से रैपिड फायर राउंड रे आपण को बहुत गुडे क्वेश्चन रो आंसर पाइबी। तो भाबुची सर यार कोन उत्तर देबी? कोविड पेशेंट को 5-6 दिन रे केमते ट्रीटमेंट कर दोजन, माने एक्चुअली से पचारिबा को चाहउचंदी जे कोविड पेशेंट को भर्ती करके 5-6 दिन केमते छुट्टी कर दोजन? This is not any quick based solution, karan how the disease will respond in each and every patient. Now let us say you are 4 brothers, let us say, born to the same mother and born to the same father. So आपण 5 जन को जदि कोविड रे इन्फेक्टेड करा हैला, your 5 bodies will differ react in 5 different ways. One of the brothers may just be an asymptomatic, the second brother may have just a little bit of flu and body ache, the third brother may just manage with oxygen, the fourth may require BiPAP, and the fifth will go into ventilation and die. So this is the level I have seen. Even in identical twins, I have not seen the same degree of response. So see, about this COVID, let me tell you one thing. The COVID virus doesn't kill. The reaction, the inflammatory reaction that it proposes in the body, that it initiates in the body, that is the thing which kills. So this inflammatory reaction is different for different people. You have seen, आपण माने देखथिबे जे गोटे लोक आपणको सेम घरे केते लोक एलर्जी रे होउचंती, तांकर एलर्जी रे सेम आपणकर माने जो व्हीट डस्ट और व्हीट एलर्जी सेगुडारे केते लोक अफेक्टेड होउचंती, किंतु सेही डस्ट एलर्जी रे पोलन रे कार तो किछि होनी. So it is a question of how the body responds to the
COVID virus, the inflammatory reaction, and it is that which causes the damage to the most of the cells. दर्शक बंधु आम बहुत खुशी जे आपण भरपूर मात्रा रे हमर लाइव शो को देखुचंती क्वेश्चन पचारुचंती आ मु एतिके कहया को चाहे जे ए जो आमे प्रोग्राम करूचु एटा कोनोसी हॉस्पिटल रो मार्केटिंग पर्पस रे नुह बा कोनोसी डॉक्टर रो ना बढ़ेबा पई नुह बा कोनोसी फाइनेंशियल एडवांटेज पई नुह ए जो कोरोना महामारी समय रे आपण माने घरे बंद हेके रही गले आउ गूगल रो कहा को पचारि जो कौन सी डिजीज विषय राइट फैक्ट न पाई एपट सेपट डिसीजन नौचंती आमे सेति पई शोटा आरंभ करिछु आ प्रति सप्ताह रे गोटे गोटे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को डाकी आपणकर क्वेश्चन रो डायरेक्ट उत्तर देबा पई चेष्टा करिछु ताकि आपण साइंटिफिक उत्तर डायरेक्ट कंसल्टेंट को ठारू पाइबे आ से अनुसार आपण काम करिवि बा स्टेप नेबी तो आज आज एई टॉपिक आमर जो डिस्कशन चली कोविड उपरे तो आपण मानकर जहाँ कोविड उपरे अच्छी क्वेश्चन पचारंतु आमे खुशी हेबु आपण सब प्रश्न रो उत्तर देबा पई सुभाषिष सतपथी सर पचारचंदी इज एवरी फीवर ट्रीटेड एज कोविड आई होप नो आई सॉ मेनी पीपल हैविंग फीवर सिंस 9 days एंड दे गेट फाइन आफ्टर 9th or later days थ्रो सम लाइट ऑन दिस Okay. So here I would like to ask you one question. Did all the people, those who had fever for 9 days, did they test themselves for COVID and then they got negative? You are not sure, neither am I sure. So those people that I have told you, they may just be having any kind of a symptoms. They may be mildly symptomatic, they may be asymptomatic, or they may have major symptoms. The people, those who have said that they were having flu-like symptoms, they might be they may be having COVID, which is a mild disease. So these people may be having COVID with a mild disease and they have come out of it. Yes, it is possible. Most of us will come out of it. Sir, when ideally a patient should get admitted in the hospital? Direct question, sir. माने समस्ते जानिबा कथा केही कहि परिबेनी आपन को जे आपन को ठकी के भर्ती कर देले रखी के पैसा नहीं गले माने नाना प्रकार एलिगेशन सर स्मॉल क्रिस्पी आंसर कि कौन हेले आपण जाई की हॉस्पिटल ले भर्ती हेबे So I have told before also, I would like to insist that when you are having difficulty in breathing, because COVID ro problem होची lungs रे सबुटु बेसी सेटा इन्फेक्ट करे. So lungs symptoms are the most profound in COVID. That is the most thing. So whenever आपण घरे जदी रही कि आपण को निश्वास नेबा पई जदी कष्ट होची बा आपण जदी अणनिश्वासी होचंती बा आपण को माने लागुची जे नाही मु आउ निश्वास नहीं परिबिनी फर्दर, that is the first and major symptom which you should definitely approach the hospital. Other symptoms for which you should approach the fever आपणकर 103 102 रे अधिका रहउची, continuously रहउची, paracetamol every 6th hourly खाइला परे भी जाउनी, so then definitely you should come and get yourself admitted because you represent a case of severe COVID infection. So these are some of the symptoms. There are many other, but I would feel that as a common man এই সিম্পটমস গুটি যদি আপনার ভিতরে দেখা দিব আপনার নিশ্চিত ভাবে যে কোনসি মেডিকল কেয়ার সেন্টার কোভিড সেন্টার গভর্নমেন্ট হো প্রাইভেট হো जोटी आपन जिबार अछि यू कैन गो सर आ माने जो माने एसिम्प्टोमेटिक बा माइल्ड सिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग पई केते बेले जिबे सर तार गवर्नमेंट क्राइटेरिया टा कोन कि आइडियली हमें कहूछु जे देयर आर कपल ऑफ थिंग्स वन इज अ डायरेक्ट एक्सपोजर सपोजिंग आपन देखिले आपन घरे रहिसंती आपन को धरनियंतु आपन गोटे फैमिली रहिसंती फैमिली रे धरनियंतु बापार कोविड सिम्पटम्स थला बहुत सिम्पटम्स कास हैला ज्वर हैला आउ सीए गले टेस्ट करले पॉजिटिव हेले तो तांको संस्पर्श रे जे घरे थिले बा तांको ऑफिस रे जैसे तांको चारिट पटे टेबल रे बसचंती बा तांकर सांगो जहां संग रे से इवनिंग रे जाई खटी करंती बा तांको संग रे मिलामेशा करंती सेही माने ही दे आर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स ऑफ कोविड पेशेंट so say they should first get themselves tested because they may be asymptomatic carriers, they may not be knowing that, and they then can be doing that. Second, those who are having fever for more than 3 to 5 days because say 4th to 5th day रे आपनकर virus रो manifestation टा हुए. So if your fever is constantly persisting, your body ache is constantly persisting, or you are having respiratory difficulties with some fever or these flu like symptoms, ताले आपन definitely जाके टेस्ट करिवा କଥା. किशोर चंद्र गौड़ा सर पचारिचंती जे तांको घरर 8 जन मेंबर एंटीजन पॉजिटिव हाउ वी कैन टेक केयर एट होम. Very good. I hope all your patients, all your relatives or all your family members are quite asymptomatic. And so if you are asymptomatic, then definitely you can take care of yourself at your home.
So maintain the basic sense of hygiene, because since you are not going to transmit to anyone in your family, since all of you are infected. But as a social responsibility, ଆପଣଙ୍କ family को contain କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ you should not go out and try to infect, because that is going to spread the infection to others. Here I would make a caution about the children. It has been found all over the world that children themselves do not manifest much of the disease. So, but they are carriers and they do infect susceptible people. ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଆଈ, ତାଙ୍କର ଅଜା ବା ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ମିଳାମିଶା କରିକି ଖେଳନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ନିଜ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଖେଳିଲେ, ବଟ୍ when they go home ସେମାନେ ନେଇ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇରସଟା, ଆଉ ଭାଇରସଟା ନେଇକି ଅନ୍ୟ ସସେପ୍ଟିବଲ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ କରନ୍ତି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଛୋଟ ଛୁଆ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ମେଜର୍ସ ଆପଣ କରିବା କଥା, ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଆପଣ ସେକ୍ଲୁସନରେ ରହିବା କଥା। ସାର୍ ଏ ବହୁ ଜଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମଲ୍ଟିପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ସ୍ମେଲ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ତାର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏ କୋଭିଡ ପିରିୟଡରେ କ'ଣ ଅଛି? Correct. So see, COVID is, it has been found that ଆମର oropharynx ଆଉ nasopharynx ଏଇ ଜାଗାଟାରେ କୋଭିଡ ର ଭାଇରସ ର ସବୁଠୁ ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ସେଇଠି ହୁଏ। So because it damages the ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେନ୍ସରୀ ଯୋଉ ନର୍ଭସ୍ ଗୁଡା ଅଛି, ନର୍ଭ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ସ ଗୁଡା ଅଛି, olfactory sense ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ସେନ୍ସ ପାଇଁ, so ସେଇଠି ଟଙ୍ଗ ଏବଂ ନୋଜ ରୁ ଯୋଉ ଆମର olfactory ଆଉ ଇଏ ଟେଷ୍ଟ ସେନ୍ସେସନ ଯାଉଛି, ସେଗୁଡାକୁ ସେ ଏଫେକ୍ଟେଡ କରିଦିଏ due to some chemical changes which happen, ତ ତାଙ୍କର ରିସେପ୍ଟର ଗୁଡା inactivate ହେଇଯାନ୍ତି। So because of that reason you usually lose the sense of taste and smell, but it is a reversible process and it comes back on its own way, but it takes some time. Like some people get it back within 7 days, some people get back after 3 weeks, and some people have got it back after a month or so also. So it does take a time, and yar significance achi. But remember one thing, that this is not specific, or nobody can say that more kebalo taste chali jaitila, more covid heichi kintu more au kichi symptom nai. So I don't think that has any relevance. ସରୋଜ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପଚାରିଛନ୍ତି, ହାଉ ଟୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏ ଭାଇରାଲ ଫିଭର ଆଣ୍ଡ କୋଭିଡ? ସାର୍ ସିମ୍ପଲି ଇଟ୍ ଇଜ ଟେଷ୍ଟିଂ। It is simply testing, because they both are virtually similar, and when this COVID is an epidemic, now we should all get tested for all fevers. ଆମର ये क्वेश्चन को ଯିବା ସାର୍, ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡାକୁ ଏଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? କୋଉଟା ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡରେ ରହିବ, କୋଉଟା ଏଚଡିୟୁ ରେ ରହିବ, କୋଉଟା ଆଇସିୟୁ କୁ ଯିବ, ତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ, ତାକି ତାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଥାଏ କି ଏ କିଛି ହଉନଥିଲା, ଆଇସିୟୁ ରେ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ତାପରେ ସିରିୟସ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ତ ସୋ ଆମର ଯୋଉ ଡିଜିଜ ଅଛି କୋଭିଡ ରେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ को आसुची पेशेंट, सो आमर गोटे ट्राएज बोल कि गोटे सिस्टम अच्छी, से आम डिस्ट्रीब्यूट करदे पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड डिजीज होचनी जो मानकर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत कम, तो तांको आमे रूम रे मैनेज करि पारिबो, कारण सेही टाइप रो लोक को आपण धरनियंत मोर आईसीयू रे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ बिजनेस, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। नाउ द डिमांड फॉर दिस आईसीयू बेड्स आर सो मच, so there is no point for any hospital to waste these ICU beds, costly and more difficult, दुर्लभ ए ICU बेड को वेस्ट करवा, जे गोटे भलो लोक को सेठी रखिकी ताटू पैसा नेवा। दिस इज कंप्लीटली रबिश, यार कोनसी सूत्र नाही, यार कोनसी मूलाधार नाही। सो वी डिवाइड द पेशेंट whenever a patient comes to the casualty on the basis of mild, moderate and severe. Mild thile we try to give him a room where there is a very little oxygen, he requires oxygen and he does not require very specialized care. Once he comes to the category of moderate and severe, सीवियर हेले तो डेफिनेटली हमर आईसीयू मध्ये हमर कैटेगराइजेशन अछि। एचडीयू इज हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जोठी हमें ऑक्सीजन हाई फ्लो रे देई परिबु, आउ दरकार पड़ले बाइपैप मशीन देकी ऑक्सीजन देई परिबु। आउ सीवियर होची जोठी हमें बाइपैप रे भी देई परिबु, नहले पेशेंट को एनी टाइम मेकानिकल वेंटिलेशन, माने तांको वेंटिलेटर रे पुरा जाई परिबो, ताको गोटे ट्यूब पुरेकी ताको वेंटिलेटर रे देवा पड़ियो। तो सेही क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंगली वी पुट देम इनटू द पेशेंट। सिमिलरली व्हेन वी गेट एनी रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी आउटसाइड हॉस्पिटल, जेमती एबे we have become a terminal care center, so we get referrals from everywhere in the western Odisha, from Bargarh to this side to Balangir and to many other places. So first we ask them what is the category of the patient, and based on that we tell them, nai amara apanongo patient severe achi, ventilator bed darkar ICU re, only then you no, we don't have any vacancy, please don't send. So similarly, if you have a patient who is moderate, mild, I need not bring him into the ICU and put him into the ICU because there is one bed is vacant, कारण सेही बेड रे
से पेशेंट को पुरेला जस्ट परे आउ 2 मिनिट परे आउ गोटे पेशेंट आसबो जाको आईसीयू बेड दरकार ताको वेंटिलेटर दरकार. सो दिस इज हाउ वी ट्राइज द पेशेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट. बंधुगण माने कहवाको तो भल लगुनी किंतु जो कोरोना महामारी विषय रे 3 मास आगरू आमे देखुतलु इटाली रे एमती होची, अमेरिका रे एमती होची. सही समय दे आमे एबे गति करूछु. दिल्ली बॉम्बे जो मेजर सिटी गुडा थिला से माने ओवरकम करि जाइछंती, पीक पीरियड ता पार हो जाइछि. किंतु मु भाबुछि ओडिसा रो जो स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन ता पई आमे टिके ठेली देछु. किंतु दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द पीक. या परे नेक्स्ट 2 मास बहुत डिफिकल्ट हबो. आउ एई टाइम ता आमे चूज करिवा एई प्रोग्राम पई एथि पई करिछु जे बेसी रु बेसी लोक कोरोना विषय जानतु. जो माने घरे रही ट्रीटमेंट हो पारिबे, केयरफुल हो पारिबे, से माने घरे रही हुअन्तु. जो मान को किछि हेई नै से माने प्रिकॉशन नियंतु, अन्य मान को हेल्प करंतु. जो माने सीरियस अछंती से माने प्रॉपर सेंटर को जाई ट्रीटमेंट करंतु. तो एई दृष्टि सर वेंटिलेशन जो दिया हुए पेशेंट मान को वन ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कि कोविड पई लंग्स ता खराब हो जाय ताकू वेंटिलेशन लागिवो. तो से वेंटिलेशन विषय लोकंकर बहुत भ्रांत धारणा अछि सर, ता विषय टिके डिटेल रे लोकन कहि. कोविड रे कोन हुए ना लंग्स रे जो आपन माइक्रो थ्रोम्बाई माने छोटो 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 क्लॉट हो जाए. आपन जदी सीटी स्कैन कार देखिबे कोविड पेशेंट रो आपन देखिबे जेंति आपन लागिबो पूरा धळा 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 बहुत बहुत पैच लागिछि. तांकर नॉर्मल लंग्स इज ब्लैक इन कलर और affected lungs is white in color. You can easily make out if you see a CT scan of any lung as a layman. So कौन हुए ना लंग टा इतने खराब भावरे ताको affected ही जाए जे the person cannot maintain. Lung is the basic organ from which we have a diffusion of gases. हमर ऑक्सीजन टा रक्त भीतर को जाए और हमर जो देहर जो कार्बन डाइऑक्साइड होजे सेटा को बाहर करा हुए. सो सेही जो जंत्रटा हमर जो लंग्स टा खराब ही जाए सेतेबेले a person neither can take in oxygen nor can give out his carbon dioxide which he is producing during the entire period during his respiration. तो एई पर्टिकुलर टाइम रे आमे कोन करू ना ताको असिस्ट करया पई फॉर द टाइम बीइंग. इट इज नॉट ए थेराप्यूटिक प्रोसीजर, इट इज ए लाइफ सेविंग प्रोसीजर. आमे कोन करू गोटे ट्यूब पुरै दउ तंटी भितरे and we put him on a mechanical ventilation and an artificial ventilator which helps the lung to breathe in and breathe out during this particular period. We expect that a time भितरे lungs रो किछि किछि आमे जो मेडिसिन दउछु बा आमे जो ट्रीटमेंट थेराप्यूटिक मेजर्स नउछु सेथिरे बोधे किछि lungs रो किछि इंप्रूवमेंट हेइबो. So as the lungs improves because of the treatment, then slowly we try to bring the patient out of the ventilator and wean him completely. So this is the process and this is the work of ventilator what we do normally. There is no point in putting a patient unnecessarily on ventilator without his requiring that. There are other means for doing that. सर आवरी एडवांस मेथड जोटा वेंटिलेटर फेल्युअर पर यूज एक्मो सेटा कोन सर और तार यूजफुलनेस केते और अवेलेबल राउरकेला रे अछि कि? तार exactly at current we do not have the availability of ECMO, but we are trying to make it because we need a cardiac surgical team and we have to run it on pump. ECMO होची कोन ना, ECMO is a device जो थरे कि हमें शरीर देहर जो रक्त अछि लंग्स टा खराब हे गले हमर जो प्रोसेस टा आपन को कहली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड ऑक्सीजन रक्त भीतर को पसेया पई सेही कामटा आमे लंग्स टू नै कि आमे अन्य गोटे मशीन थ्रू रे करिवु. सेही मशीन टूटा को कहती एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन. तो दिस इज समथिंग एक्जाक्टली लाइक द डायलिसिस मशीन. जब डायलिसिस मशीन आपण किडनी रो कामटा कर दिए सेही भलिया एई मशीन टा एक्मोटा आपणकर एक्जाक्टली लंग्स रो कामटा करे. किंतु यार ए सेम पर्पस इज सेम. आमे जेतेबेले देखिलु जे वेंटिलेटर दे देई कि हेई पारुनी आमे कोन करू ना ताकू एक्मो रे नहीं गले किछि दिन पई ता लंग को रेस्ट देले और ट्रीटमेंट देले हुए तो 8 दिन 10 दिन आमे देखिछु हैदराबाद अपोलो रे आमे प्राय विगत 4 मास रे प्राय 12 रु 14 पेशेंट को करछु. ता देरु प्राय 9 around 9 patient of them they have come out of it and they have gone back to their home with a good lungs, but 4-5 of them they have not been able to go through even in spite of ECMO. So this is one of the last resort which we do usually for जो patient माने ventilator रे भी तांकर हेई पारना. एई कोरोना रो विभीषिका मध्य जीवन चक्र तो चलुची तो से सही भितर गोटे गोष्ठी पेशेंट बहुत सार सफर करुँच दोज आर द प्रेग्नेंट वुमेन्स तांको माने कौन कहबी माने
बहुत कष्ट दी गति करछन्ती सही धारे जने प्रश्न पचारछन्ती देवी दत्त दास पटेल सर इफ a pregnant woman is suspected with COVID-19 but antigen test is negative but symptoms are developing one by one, then what are the precautions she used to maintain her optimum status? First is, if antigen is negative, then we should go for an RT-PCR to confirm the diagnosis, because that is the next step which we normally do. And second thing is, during pregnancy, there are routine things which are prescribed for all corona patients is the same. Now, what happens is the vertical transmission of the infection from the mother to the child. It is very, very rare because God has given us a placenta from which we usually do not have, but still it is not guaranteed. During that process of delivery, it can happen. But definitely, if you are doing it in a good institution which is prepared for that, and they have some expertise or protocols in place, then the child can be remained. There have been a lot of deliveries being done in Mumbai, especially at the Nair Hospital during this COVID time. And the children have been non-COVID, and they were handed over to their mothers once they became COVID-free after the delivery. So it is possible in this time, but you require a protocol. You need a specialized care center which is going to handle, and you should have a good neonatologist who is ready to handle if the child turns COVID positive, because vertical transmission cannot be guaranteed that it will not happen. If it happens, then you should have a neonatal unit which is handling COVID positive patients. So that is the biggest challenge. सर बहुत क्वेश्चन गोटे पेंडिंग रही गलानी तो सीरियली आमे किछिटा क्वेश्चन नहीं नेबा आगे आराधना सहलियर पचारछन्ती सर टेस्ट क्या फ्री होता है? सरकार में फ्री होता है, अब प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आई थिंक द बेसिक कॉस्ट ऑफ द बेसिक कॉस्ट है और गवर्नमेंट गाइडलाइन है, कैपिंग भी है शायद उसका, जो गवर्नमेंट ने रेट तय किया है उसी के हिसाब से होता है. नैतिक गोयल, हेलो सर, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट शुड बी द ऑक्सीजन सैचुरेशन इन कोविड? See, there is nothing like an oxygen, but once the oxygen saturation falls less than 93 in your house, or 92 to 93 in your house on room air, at that time it is the ideal time for you to seek medical advice, and you should come to the nearest hospital. सिद्धार्थ शंकर सेवक पचारछन्ती व्हाट इज द रिकवरी टाइम फॉर द कोविड कोरोना वायरस डिजीज? It is difficult to say specifically. I told you before, Siddharth, that there are many. It is dependent entirely on the degree of infection and your body's response to it. If your body is very, very strong, if your immunity, and if you drive it, you may just get out of it in a very few days. But if you are weak, if your immunity is weak, you may suffer a lot, and it can take days and months for you to recover. बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन गोटे सर सुरेंद्र साहू पचारछन्ती पॉजिटिव लोक होम क्वारंटाइन रे केते दिन रहबा कथा? Very good. आउ केमिति जानिबा आम देह रे कोरोना वायरस नहीं? See, coronavirus in a positive patient who is asymptomatic, Government of India regulations say that a 17 days quarantine is enough. Initially, it was thought to be 14 days, but later on, it was made to be 17 days to cover the longest incubation period of the virus. So, assuming that during that period, in these 17 days, all the viruses of your body are killed, and you are basically coronavirus free. So previously कौन होतला ना आमे करथुलु गोटे टेस्ट करी कि तबे नेगेटिव हला परे पेशेंट को डिस्चार्ज करथुलु बा यू आर बीइंग मेड फ्री फ्रॉम क्वारंटाइन, बट दैट हैज बीन डन अवे बाय द गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ वेरी cumbersome process. And second thing, there was no, you have many false negatives, false positives also. Even after you have stopped shedding the virus, सेतरे भी आपण को बहुत false positive आसपारे. सेति में government has done away with this procedure. So nowadays, if you are after 17 days, you are declared free of the disease. डेड वायरस पार्टिकल Yes. गुडा भी आरटीपीसीआर रे Exactly. पॉजिटिव Exactly. देखांती तो डेड वायरस रो किछि सिग्निफिकेंस नहीं. मूलचंद बिदोलिया पचारछन्ती सर नमस्कार सर, आई एम ए 63-year-old diabetic heart BP and COPD patient. Recently 5 days back I have recovered from COVID. Congratulations sir, बहुत खुशी कथा. This was also confirmed from CT report, but still there is a complaint of cough and vibration in my body. I also feel weakness post COVID, so kindly advise me, will I recover from all this problem or it shall continue? If any medication I am taking regularly, diabetes and BP and heart medicine as advised by the doctor, but there is no other medicine for cough and weakness.
post COVID, there is a lot of time. The weakness which happens, it is mostly because of the lung or the decrease in the oxygen carrying capacity of the body. So the only point from the COVID point I can say, because I don't know your full medical history, I can tell you from the COVID point that breathing exercises are the most important in the post COVID zone. We initiate that when you are admitted in the hospital. All my patients in the COVID ward have got something called as a spirometer. So the spirometer is something by which ଶଙ୍ଖ ଯେମିତି ଫୁକନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପର ଜିନିଷ ସେଟା ଫୁକିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲଙ୍ଗସ୍ ଅଛି ସେଟା ଏରିଆ ଯୋଉଗୁଡା ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ବା ଯୋଉଗୁଡା କୋଲାପ୍ସ ହେଇଯାଇଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ରିଓପନ୍ କରିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର ବ୍ରିଦିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିପାରିବୁ। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଆଡଭାଇଜ ଦ୍ୟାଟ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡୁଇଂ ସମ୍ yoga, pranayams and breathing exercises, which is going to definitely help to improve the capacity of your lungs. Once it improves, then I think this weakness and the other general debility part, that should go away to a most. For the rest of the other part, I think you should please consult your physician, because I do not have any full medical history of yours. सर सूरज କହିଛନ୍ତି salute for your dedication sir, heads up. Thank you. I respect that. थैंक यू। ଆଉ ଆମେ ତାର ହିଁ ଭୁକା ସାର୍। ହଁ, ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏତେ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ 100% ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ, ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ ଇଜ ମୋର ଏ ଆର୍ଟ ଦେନ୍ ଏ ସାଇନ୍ସ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ 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 ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ପେଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଉତ୍ସାହ ବଢିବ। ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ସାର୍, ମତେ ଲାଗୁନି ଆମେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବା। ସରିଫୁଲ ୟୁନିକ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହାଇ ସାର୍ ଇନ୍ କୋଭିଡ କ୍ୟାନ୍ वी यूज HFNC in place of BiPAP? Very good. See, HFNC is high flow nasal cannula. Yes, you can use, that is one of the approved modality of using therapy. But remember one thing, already people are shouting at us because of the costs involved. So HFNC, the basic, the nasal pillow for the HFNC is also quite a costly thing. And getting a HFNC at this moment, ordering HFNC, it will take at least 3 months for the HFNC to reach the hospital. So whatever we are using it. But yes, I agree to your point that HFNC has got a very good mortality recovery as shown in most of the studies. Sir, Mulchand Bidolia sir, ଆପଣଙ୍କୁ thank you କହିଛନ୍ତି for your valuable advice. Thank you sir. Sir, ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁନିକ୍ ଲାଗୁନି कि डायरेक्ट पेशेंट सहित एंती व्हाट्सएप रे ये फेसबुक रे क्वेश्चन Definitely, it's a very nice reaction. Nice initiative from our hospital. होप आगको आमे आहुरी भलो भाबे आहुरी करिवु। आ किछि क्वेश्चन नबा। हेल्थ मैटर्स आपको कहछने थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल द क्रिटिकल क्वेश्चंस, प्लीज एनलाइटन that if body pain or head pain is also symptoms of COVID. Yes. It is just like any general flu. So definitely your body pain and head pain are definitely some of the major symptoms. So you should do not neglect it and you should come to the doctor for test up. Gulfam Khan pacharchandi, what about other diseases? Doctors are not taking care of other diseases, and because of that people die. And Correct. Then what die record as corona death? Why is only corona disease exist in this world? What about pneumonia, hyperventilation, etc.? Sir, eko kenti answer debe. So see, there is something else about this question which I would like to say. During these times of corona, we have found that there are other diseases, other people with other diseases who are getting neglected. Now, because of it is an epidemic, so government is trying to take away or force most of the hospital care or the healthcare into focusing into corona and trying to absorb the patients who are with corona. So what is happening in this, that many of the other patients who are having other diseases, they are probably not being taken care of. But in this particular hospital where I have just now started my work, we do have, many hospitals have got a section of non-COVID versus a COVID zone. So once a case, let us say a trauma comes, you can have an accident. It is not a non-COVID time. So during a COVID time also you can have an accident. So what do we do? So once a patient comes to the casualty, we have to take it to the non-corona side or to the clean zone. So what we do some antigen tests. Once the antigen tests are negative, we can take the patient emergency services or for the emergency surgery or for the emergency pregnancy, delivery,
So these kind of services can be provided. Similarly, elective cases also can be done, or elective surgeries, elective procedures can be done by making you, by first of all diagnosing that you are not having corona, and after that taking you for the procedure. So this is one way of answering your question. Thank you, sir. Ajay Pacharchanti, hi, I know my question is silly, but I want to know, is it possible that people without having any symptoms also suffer from COVID? Yeah, I told you initially 80% of the people suffer from like that. 80% of the people are asymptomatic, but they are carrying. They feel that they don't have corona, but they actually are carrying it and they are spreading it, but they are without any symptom. Your question is not silly, Ajay. I will say the person who was thinking that COVID is a scam, rather that is silly. So Sundargarh Mirror, I have seen many live sessions of Rourkela Science on COVID with Bhubaneswar doctors, but we think this is so far the best session. Thanks to JP and Rourkela Science. Thank you. Thank you so very much. much. Abhipsa Bhanjadev, Pacharchanti, how to take care of heart patient who have COVID, who is COVID positive and having dry cough and fever, no breathing issue, how to treat cough? See, cardiac patients as such, they can have more symptoms, aggravated symptoms, because COVID itself causes coagulation and can cause myocarditis and arrhythmias. Arrhythmias माने आपनकर heart rate जो अछि सेटा fast हे जाई पारे, slow हे जाई पारे, आपनका heart beating रे भी difficulty हे पारे, ଆଉ heart रे myocardial infarction माने जेमति आपनका heart attack हेतिला सेही बळे symptoms आपनको COVID पई भी हे पारे. तो कोविड टाइम रे जो कार्डियक पेशेंट्स अछंती तांकर जदि कोविड हला, as a routine, whenever any patient with COVID comes to our hospital, we do an enzymatic test, the troponin T test, we do it in our casualty to rule out that tankar COVID jogu tankar kichi heart ro kichi effect heni. Plus we do a prophylactic ECG to see whether there is any tachycardia or bradycardia or any kind of arrhythmia kichi COVID pai honi. जदि हेतिबो ताले हमर जो इन हाउस कार्डियोलॉजिस्ट अछंती तांको इमीडिएटली हमें एडवाइस पे पचारि की, एंड वी टेक द requisite measures जो तरह की the patient will be safe even during times of COVID. Sir, Mubauchi, it is very difficult to treat a educated patient than a layman. Educated patient एते aware थांदी. We are happy to explain all your queries and question भी सही level रे आछि. We are happy to answer. ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ. Sadiq Anwar, hello, I have doubt that among those patients died due to COVID-19 who had taken remdesivir drug, so is there any possibility that death can be due to remdesivir side effect? See, remdesivir, as whenever two technical question. Yes, no problem. It is a technical, but I will answer you because since you have it as your doubt. See, remdesivir, there are certain prophylaxis. I don't use a remdesivir just as it comes. Anytime, whenever I prescribe a remdesivir to a patient, it should be either severe or moderate to severe disease or moderate proceeding into severe. For all mild and moderate disease, we do not use remdesivir, for the basic reason that remdesivir is a scarce drug. It is not available. Currently, my friends in Bhubaneswar are telling that it is out of stock. And it had happened, the same thing had happened during. So there is no point in using the scarce resources too much and for commercial or whatever purposes. First. Second thing, no medicines which we are using at this current, they are all like a double-edged sword. There is a risk and a benefit ratio. So whenever we give remdesivir, first and foremost, I estimate the liver enzymes, because there have been reports of fulminant hepatic failure. Liver pura kharap ho jaichi the patient को remdesivir dela pare. So we always measure the liver enzymes. Only when they are found to be normal, then we administer remdesivir. So in this way, we try to prevent most of the complications which are likely to come from that. But my friend, I am not God. There cannot be any drug in this world which does not have any side effect, and it is no way to predict that this drug will not have this side effect in the X patient. So I don't think this is a relevant point in that particular. Same thing about tocilizumab. Tocilizumab is also a drug of the last resort, but we try to make sure that when the interleukin 6 and the other inflammatory markers of COVID are raised, only then we use. It is not being used rampantly because it is also a scarce resource. Jyotirmoy Sadangi, बहुत interesting question गोटे पचारछंती sir. I have lost my sense of taste and smell since last 4 days.
in panic yesterday and I got myself tested for COVID, but the result came negative. So I want to know what is the reason behind the sudden loss of taste and smell. See, Jyoti, the basic, I explained it beforehand during my previous part of my discussion that the loss of taste and sensation of smell and taste, they are because of the chemical imbalances which happen at the nasopharynx. The nasopharynx means nakaro a portion of tongue. What happens when the virus, or it can happen in simple influenza also. It may be H1N1, it can be our simple influenza, during which if you have a very florid kind of a disease, you can also lose. You must have heard previously, "Are nakore kichi basna asuni." It is not that COVID causes more, but COVID, yes, it causes more extensive damage. So that is why it is more pronounced and maybe more common. That is why people recognize it more than that. But I have told you before also, it is not a symptom that if you lose your taste, you have got COVID. It is not correct. It can be happening in simple influenza virus also. कृष्ण साहा पचारछंती कि एसिम्टोमेटिक जो माने थांती से माने डिजीज ट्रांसमिट करि पारंती कि Very much. They are the most dangerous things. दे आर द मोस्ट डेंजर. So that is why. Manish Jain पचारछंती सर प्लीज गिव योर कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट वी कैन व्हाट्सएप यू एंड यू कैन आंसर व्हेन यू आर फ्री सर. क्षमा दियंतु पब्लिक प्लेटफॉर्म रे नंबर मागले आमे तो देई परिबुनी किंतु आपण आज राति 10टा पर्यंत जहा क्वेश्चन पचारिबे आमे बसिके एटी आंसर दबु. Sunil Khemka, nicely said, sir. Thanks for the vital information shared in a most simplest way so that we could get the reason behind the action taken during the treatment. Thank you, Sunil bhai. Santosh Kumar Behra Pacharchanti, sir, how much percentage of chance to get positive again after once you cure from COVID, sir? $1 million question. It is a very, very tricky question and it's a very difficult question to answer. It is now being found because see, all our knowledge about COVID is very infant. I am just like ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାଟଶାଳୀ ରେ ପଢୁଛି ଏବେ ମୋର କେବଳ ଅ ଆ ରୁ କ ଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢିଛି. I have not even ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବି ମୋର complete ହେଇନି about COVID because we have just seen that 6 months back. I started from April and this is and today is September. So I have just learned only a few syllables and our knowledge of COVID is not profound. People are studying, people are every day something new discovery is being found. किंतु ए जो आपण जो पचारे रीइन्फेक्शन रो कथा, रीइन्फेक्शन इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बट यस इट हैज बीन प्रूवन इन द आउटसाइड कंट्रीज एंड वी आर आल्सो रिपोर्टिंग इन इंडिया सम वेरी वेरी स्पोराडिक केसेस. यार मेन कारण होची द इम्यूनिटी फॉर द रीइन्फेक्शन इज नॉट वेरी आपण को थरे इन्फेक्शन हला परे आपण को जो इम्यूनिटी रहउची एंटीबॉडीज दैट इज नॉट लास्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अ सेकंड इन्फेक्शन. So that is probably the most reason where it can happen. But many people are getting, because some people have reported that even after a month or two, or they have got it. So even after people have got after 3 months, so they have reported it. Yes, it can happen. It's a very likely thing. Naitik Goel Kochandi, thank you sir for your help and support. Naitik bhai, we are always there. Siddharth Shankar, can a person work in his working place after 17 days of quarantine? Definitely, yes, very much. Devdatta Das Patel Pacharchanti, acha, thank you Kochanti, most welcome. Partha Sarathi Mahapatra Pacharchanti, I heard once a patient coming out of the ventilator, still chances are there to get a stroke. Yes, a very nice question. The basic problem with COVID is that once the patient is having, during COVID what happens, there is an increased thrombogenicity of the blood. ता माने आपनकर ब्लड रो जहां आपण मैनिफेस्टेशन देखचंती, स्ट्रोक हो बा हार्ट अटैक हो बा आपण लंग्स रे भी जो मैनिफेस्टेशन सेटा सब छोटो छोटो माइक्रो थ्रोम्बाई माने छोटो छोटो क्लॉट हे जाउची चारिपटे. ए रक्तटा बहुत माने अठाळिया बळिया हे जाय and it tends to clot. That is the main problem in COVID. So yes, it is not related to the ventilator, coming out of the ventilator, but the disease process of COVID, it is even during the later stages we have seen that you may have a thrombotic tendency in the body and you can form clots which can lead to many other problems like strokes, which can lead to some kind of a pulmonary embolism. So you should be very cautious. In many patients we do a D-dimer test, or if the D-dimers are high, then we prescribe them some blood thinning medications for more than 3 months. Sir, prophylaxis ପାଇଁ ଜଣେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିମୟୀ ସେନାପତି, what medicine can be taken for prophylaxis? See, prophylaxis ପାଇଁ for healthcare workers, ivermectin has been prescribed.
Previously, there was something about HCQ, but HCQ fell out of the favor of many countries. But still, countries like Australia and Britain, they are still recommending it to all their healthcare workers. So currently, I would say ivermectin and this HCQ are the two things which are probably doing the rounds currently. सर एई माने को लाइव क्वेश्चन को टिके किछ समय ପାଇଁ स्टॉप करिवा आउ आमे गोटे रैपिड फायर राउंड सर करथिले फॉर द मिथ बस्टर माने आपण सर यस और नो रे आंसर देबे बहुत गुडे तार डिस्कशन हे गलानी जदि ब्रीफ रे कोनोसी पार्ट आंसर देबा को चाहिबे तो देई परिबे आ दर्शक बंधु एई पार्ट पय मो स्टार्टिंग रु कहितली जो माने लाइव अछंती दे विल एन्जॉय इट सर स्टार्ट करिया SCQS has a prophylactic role Yes, but sir but it is controversial, that I Controversial. have told you. Some countries don't agree. we should wear mask during exercise. No. Prolonged use of mask causes carbon dioxide intoxication and oxygen deficiency. Yes. Drinking alcohol protects from COVID. Very laughable. No. Thermal scanner can detect COVID-19. It can detect fever, but not COVID-19. There are currently no drug licensed for treatment or prevention of COVID. Correct. Adding pepper to your soup or other meals prevent COVID. Simply, you can enjoy your soup, but not COVID. COVID in terms of COVID is transmitted through houseflies. Not at all. Spraying or introducing bleach or disinfectant will not protect you against COVID. It won't protect you. सर टिके एथरे ब्रेक नेबी जो हमर डिसइंफेक्टिंग चैनल स्प्रे तार किछि रोल अछि कि Nahi, kichi nahi. They have rather caused lot of skin irritations Skin irritation. and other skin lesions. So they have been all stopped. आपण से जो tunnels type रो हितला जो उतरे bleaching bleaching पानी एगुडा सब आस्तुला. So they have all been banned in वीडियो रे most सर places. देखि जो माइग्रेंट वर्कर आस्ते Yes, ताको पूरा टैंक रु पानी आके Correct. डाल देले Bleaching But पानी all those are bogus thing. Nothing else. COVID is a airborne disease, Yes, currently it is being told to be, but it is very Not controversial sure. because it does not stay. The virus per se does not stay in the air for long, but it is directly through droplet infection. exposing yourself to sun or temperature more than 25 degree protect you from COVID. No, not at all. But you will get tan. You will get a beautiful tan. Hold your breath for 10 seconds and you are free from COVID. It can only increase your vital capacity, but it will not let you get out of COVID. COVID can spread in hot and humid climate also. Yes, it does spread. It can spread all over the world. Taking a hot bath will prevent you from catching COVID. No, you will enjoy a very nice evening, but it won't prevent COVID. Rinsing your nose with saline can prevent COVID. No, nothing of that sort. Sir, eating garlic prevent COVID. No, please put your garlic in all your soup or something like that. Don't use it for. Sir, माने एबे सर काढ़ा बहुत लोग पिउचंती काढ़ा माने कोन कोन पी पकोचंती मझिरे तो स्टार्टिंग रो गो कोरोना गो भी बाहरी थिला सर तो सेगुडा एक्चुअली साइंटिफिकली एते प्रूफ नुहो जदि कोनसे जिंस साइंटिफिकली आउ साइंटिफिकली न भी हो जदि काम करूची दैट विल कम टू द मेन स्ट्रीम एगुडा सब टेम्पररी लोक निज पब्लिसिटी पाई सेगुडा प्रचार करंती फेसबुक व्हाट्सएप वीडियो रे आसे बहुत किंतु ऑल दोज आर ऑफ नो यूज आउ या सहित आमे सब बहुत गुडे मिथ को बस्ट करि सारिछु एबे एबे पुनी किछिटा क्वेश्चन नबा Can I say something about some immunity IgG? or yes something? sir So I would like to, because since the group to which I am addressing looks to be a very enlightened group, so I would just like to say a few words about the immunity that happens because you are all doing tests. So once you are infected with coronavirus, there are two types of immunity which starts immediately developing within your body. One is the IgM and another is the IgG. Remember, M is for early. So immediately when you get a coronavirus, you can be easily detected by using of the IgM antibody, IgM test. So, and once that disease progresses, so we can estimate how much of immunity that you have by measuring the value of your IgG. Now, what is the relevance of this IgG? We are doing it in many of our other cities. We are doing it. You know, there is something called as a plasma therapy, which has been, well, there are so many controversies associated with it, but plasma therapy is one of the accepted therapies. Rationally, one person jar of COVID heichi,
सी जे रिकवर करछि ता देहरे किछि तार एंटीबॉडी अछि इम्यूनिटी अछि सेही प्लाज्माटा जदि आमे नै कि गोटे आउ गोटे लोक को देई परिबु जार धरनियंतु जे कोविड संगे लड़ाई करि पारनी तार एंटीबॉडी एते नाही so rationally logically speaking that is going to help it. This is the basic logic which is happening. But how do you know that I am taking this X from a person who is affected with COVID but ता भितरे सेतिके antibodies अछि ना नाही तो सेहिति पई IgG antibodies रो evaluation is a very good method to know what is the level of immunity you have against COVID. So that test, if it is made available in Rourkela or any other place, that will help us to know that what is the level of the immunity that you have, and it will also allow you to donate your plasma for another patient. Which is a very great thing. We have seen that few patients do recover after the plasma therapy. So IgG is quite important in this. Sir, you uttered the term plasma therapy. Please enlighten us with that. What is its roles, benefits, and how much it is useful? Correct. See, plasma therapy is what do we do in plasma? It is very simple. We take the blood from a person who has been RT-PCR COVID positive and has spent at least 6 weeks after his COVID, he has recovered from COVID. So what happens in such a patient? He is expected to have a lot of antibodies to this particular virus. So what we do is when we estimate the IgG antibody levels, if the antibody levels are high, that means that person can give his plasma, and once this plasma is given to another person who is not able to fight with COVID, so he is likely to benefit from that. So there are other aspects of it. As I have told you before, for all the therapies of COVID, there is a risk versus benefit. A plasma, when it is taken from another person's body, what happens is there are some antigens, antibodies other than COVID also. So it can cause some reactions within the patient who is receiving also. So these are certain of the risks which we take once you give the patient some plasma. But another part about the plasma therapy, if it is given early in the disease, there is definitely some degree of improvement in many of the patients which we have seen. But I tell you, it is not a magic cure that if you have COVID, you get one bottle of plasma, you are out of COVID. That is completely a myth, and it is not that, it does not work that way. But we give it with a hope and with an estimation that these antibodies are probably going to help the COVID patient. Thank you, sir. आमे एठी बहुत प्रकार मेडिसिन दा ना नौचु तार साइड इफेक्ट एगुड़ा बहुचु किंतु आपण मन को रिक्वेस्ट कि विदाउट ए प्रेस्क्रिप्शन प्रॉपर एडवाइस फ्रॉम ए फिजिशियन घरे मेडिसिन गुड़ा नेबे नहीं एजिथ्रोमाइसिन एससीक्यूएस आइवरमेक्टिन बहुत गुड़े ना नौचु आपण कोन करंती दुकान को जाई कि मते एटा देख खा तापरे जो साइड इफेक्ट और रिएक्शन होबो तार जिम्मेदार आपण निजे हेबे तेणु निजे सेल्फ मेडिकेशन करंतु नहीं कोविड इज नॉट ए इजी डिजीज कोविड इज नॉट एट ऑल इजी डिजीज माने भगवान समस्त को ना शास्ति दियंती बा बुद्धि सिखांती कहीं ना वी वर टेकिंग वायरल फीवर सो लाइटली फॉर लास्ट आई थिंक 100 years आफ्टर स्पेनिश फ्लू आमे वायरल फीवर को एते लाइटली नोतलो भगवान कहले वायरस को लाइटली नोच निया गोटे वायरस छाड़ली तुम ऊपर आउ सर माने लागुची आमे केबे पर्यंत याकू माने एमती सहीबा माने एई डिसेंबर पर्यंत किछि कम होबो ना चालितिबो एडा यार दीटा उपाय अछि प्रथम उपाय होची जदि हमको किछि वैक्सीन मिलिला द्वितीय उपाय होची जे एते लोक संक्रमित हे गले कोविड रे जे हमरो हर्ड इम्यूनिटी तयारी हे गला थरे हर्ड इम्यूनिटी हे गले कोविड रा किछि ना रहइबनी आ जदि वैक्सीन हे गला जदि मास स्केल रे वर्ल्ड वाइड पूरा ये हे गला तले कोविड रा किछि रिलेवेंस रहइबनी These are the only two ways by which we can prevent or eradicate COVID. बहुत डिजीज अच्छे दुनिया रे माने स्टार्टिंग फ्रॉम एड्स मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस टाइफॉइड एंड आम ए डिक्शनरी आ गोटे डिजीज जोड़ी हो कोरोना बा कोविड-19 इट विल बी देयर विथ अस फॉर रेस्ट ऑफ आवर लाइफ बट एबे जेहेतु एटा नुआ गोटे जिनस तार विषय बहुत साइंटिफिक रिसर्च चली जना पड़नी केबे जना पड़ो किछि जना पड़ुनी तो से आमे एबे गोटे खराब समय दे गति करुचे किंतु वी शैल ओवरकम इट एंड वी विल ओवरकम इट किंतु आपण मानकु समस्त को ध्यान देवा पड़ो निज परिवार और निज समाज रो कहीं ना बहुत लोग एमती था कि होम क्वारंटाइन कहई थाए सर आउ जाकि मार्केट रे बुलुता
तो ଏଇ ଇରେସ୍ପନ୍ସିବଲ ବିହେଭିୟର ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଆଜି ଦେଖୁଛୁ, ତେଣୁ कोरोना आज ना काली हब किंतु जेमती धीरे धीरे ये जो हॉस्पिटल बेड शॉर्ट न पड़ू, डाक्टर शॉर्ट न पड़तु, धीरे धीरे है कि जदि आम फेज टा पार हो जावा तो किसी कहारी असुविधा हेनी। तो सर या को जो कहले गोटे माने ये जितबार गोटे तरीका होची वैक्सीन। वैक्सीन रो सर कौन ट्रायल चली कौन आसीबो, सब तो अगस्त 15 रे आसीबो कहउतिले किंतु एटा सेप्टेम्बर 15 हेलानी। तो ता विषय बहुत लोक इगरली वेट करिसंती कौन किछि आपण वैक्सीन विषय में दीटा जिनस कहबी, देयर आर सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज एंड क्लिनिकल इश्यूज। So political issues, there are many people, there are many presidents, there are many heads of state who want that the vaccine should be there and they can take political mileage out of it. But remember one thing, medicine does not follow what the political masters do. It cannot be, they are not in their clutches. Second hochi vaccine ro economic cost. There are many companies who are making vaccines and who want to be the first person to find out the vaccine and make a huge money out of it. That is the second aspect. But the real aspect for which we all, humanity, doctors, medical fraternity, everybody is wanting is actually a true vaccine which can cure the disease and which can give us some long lasting immunity about it. So the third question is most relevant to us. Currently, there are a lot of trials which are going on with various types of vaccines. They can be a dead vaccine, which is very easy to produce, but they do not have any long lasting influence because it is very simple. You grow the virus, kill it, and then bottle it and give it. So it will give you some surface antigen. It will give you some immunity for that. But that won't be a very lasting immunity. What we require is a live attenuated virus, which is going to give us a long lasting immunity. Getting such a strain for corona, it is not so easy because of multiple reasons. It is changing itself so fast. Today it is one strain, tomorrow it is another strain. So that is one of the biggest problems. And replicating it, RNA viruses, is a very, very difficult thing. It's not like the DNA viruses that it is not so easy. So there are a lot of challenges, but the medical fraternity, I think, are so deeply engrossed in this that they are definitely, I believe that within the next year, we will definitely be having one or two of the vaccines which are actually going to show some promise. So let us wait patiently for them. Let us pray for that day. But please don't jump to any conclusions or listen to any of this political propaganda or economic propaganda. Thank you, sir. किछि दर्शक सर पचारछन तांको के रिलेटिव एटी एडमिट अछंती, तो तांको एटी तो एडवाइस देई हबनी, किंतु आपण केमती सर कम्युनिकेट करूछंती तांको? हमर एई जो कोरोना टाइम रे कोरोना इज अ वेरी डिफरेंट टाइम्स. इट इज नॉट द रेगुलर टाइम्स दैट यू आर हैविंग. कोरोना टाइम रे नॉर्मली हमरा आईसीयू रे कोन हुए ना, देयर इज अ टाइम फॉर काउंसलिंग. जेतले आईसीयू रो पेशेंट अटेंडर आसंती तांको आमे पूरा डिटेल करके तांको पेशेंट विषय रे बुझाउ देउ. तापरे से माने आईसीयू भीतर को जानती, आईसीयू रे निजो पेशेंट को देखंती, सेठी भी बेड साइड मध्ये तांको बुझा हुए जे एटा चलची, एमतिया होची, सेया होची. किंतु कोरोना इज अ डिफरेंट टाइम. एमतिया टाइम रे when we also have to wear PPE for during these things. So it is not allowed as per government protocols that any person can enter into can you enter into a quarantine zone? No, you cannot. So similarly, during corona times, it is not possible for attenders or somebody to have a direct face-to-face interaction. So here in Jayaprakash, we have devised a virtual counseling method. We are doing that. We are starting that. But because the patient load is too much, so some time discrepancies may be there. But we are trying to do virtual counseling to each and every of the patient attender by means of a Skype interview, or through some other means of electronic media transmissions. So that is how we are going to communicate with all the patients. Sir, माने मैं भी चाइल्ड बट मोर गोटे सजेशन कि आमे जो पेशेंट मान को बेड साइड रो व्हाट्सएप कॉलिंग बा किछि करी के देखै परिबा कि एंती किछि पॉसिबल हे परिबा? There are some legal issues by showing about the WhatsApp call or something from the inside hospital, because legally patient details or something being shown to other retrievable devices, माने जो थरे कि record करके हमरो एटा को देखै परिबो, he can store that. It is actually not allowed as per the Indian Medical Establishment Act. So that becomes a real challenge to do that. And we need to have a lot of consents for that. We need to have a consent from the patient, from the party, and from the management. So it is a very cumbersome process. So that is why we are doing only the visual counseling of the patient. एक्चुअली बंधुगण यही
ପ୍ରକୃତିର ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ଆସ୍ଥା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା। ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟର କ୍ଷତି କେବେ ବି କେହି ଡାକ୍ତର ଚାହିଁବ। ଆମ ହାତରେ ଯେତେ ଅଛି, ଯେତେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ହୁଏତ କମ ଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଜାଣି କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟର କେବେ ବି କିଛି ଖରାପ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ବା କୌଣସି ଡାକ୍ତର ବା କୌଣସି ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରୋଭାଇଡର ଚାହାନ୍ତି ବା କରନ୍ତି। ମିସହେପ୍ ହେପେନ୍ସ, ଆଉ ମିସହେପ୍ର ମିସକମ୍ୟୁନିକେସନ ହୁଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ। ଆଉ ଆମେ ଆମେ ଏବେ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ତାକୁ ଯଦି ସୁବିନିଯୋଗ କରିପାରିବୁ ତ ଆମର ଯୋଉ ଗୌରବଟା ଟିକେ ହଜି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବା ସାର୍। Yes, definitely. ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍ वी आर वर्किंग। ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ଅର୍ଥୋପେଡିକ ସର୍ଜନ, କଣ ଜେନେରାଲ ସର୍ଜନ, କଣ ଗାଇନିକ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ଆମର ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଭିଡ ସହିତ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ वी आर ଅଲସୋ ରେଡି ଟୁ ୱାର୍କ ଫର ୟୁ ପିପଲ। ତ ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛୁ ଆମେ ଆମର କାମ କରିବୁ। ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ କରୋନାକୁ ଗୋଟେ ଜୋକ ବା ଛୋଟ ବେମାରୀ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଅ ମାସିଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଭାବୁଛୁ, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଶୁଣୁଛୁ ଭୂତ ଆସୁଛି ଭୂତ ଆସୁଛି ଭୂତ ଆସୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ଭୂତ ଆସିଛି ସେଦିନ ଭାବୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ ଅ Fake. ଫେକ୍ ଜୋକ୍। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ଜୋକ୍, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ସିରିୟସଲି। ସାର୍ ଆମେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଦେଇଦେଲୁଣି, କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଛାଡି ଥାଇପାରୁ। ତ ଆମେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଅନ୍ତିମ ଲାଇଭର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବି ସାର୍ ଆବାଉଟ ଦ ଡେଥ୍। ତ ଡେଥ୍ ସାର୍, ମାନେ ହ୍ୱାଇ ଡେଥ୍ ଇଜ ସୋ ହାଇ ଇନ୍ କୋଭିଡ or at all it is high? It is high. Why? Because first of all, COVID, what happens is, and it is instantaneous at many times. Like ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମକୁ sometimes ହୁଏ ଯେ ପେସେଣ୍ଟଟା ଡିଟୋରିଏଟ୍ କରିକି କୋଭିଡ ଡେଥ୍ କୁ ହେଇଯିବା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିଥାଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ we are sometimes we do not have much of time to do anything. Second thing, ମତେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି ଡକ୍ଟର ଯିଏ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ମାନେ he cannot also perform 100% to his extent because of the PPE that we are wearing. PPE ଭିତରେ ଆପଣ ଥରେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆମକୁ କେତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗେ। ଭିତରେ ଝାଳ ହେଇକି ଆମେ ପୁରା ଓଦା ହେଇକି, ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଡ୍ରେସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡା ପୁରା ପାଣି, ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ବାଥ୍ when we come out, when we open our PPE. ଥର୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି ପିପି ରେ ବହୁତ ମାନେ ସଫୋକେଟିଂ ଲାଗିକିରି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ କିଛି ଦିଶେ ନା, you cannot see it properly through the PPE. So in spite of all these difficulties, the healthcare workers are working there in the COVID. It is actually a salute to them because they are doing it out of their love for their profession and out of the love for mankind. So I request everyone, please respect them, and that is the least you can do for them. ଡେଥ୍ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ମୁଁ ସାର୍ ପଚାରୁଥିଲି, ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ କୋଭିଡ ୱାର୍ଡରେ ୟୁଜୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଥାଏ ସାର୍ କି ମୁଁ ମୋର ରିଲେଟିଭ ଗୋଟେ କିଏ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡା କରନ୍ତି। ତ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ସେଗୁଡା ପସିବଲ ହଉନି No, ସାର୍। କଣ yeah. ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି ସାର୍ ଡେଥ୍ Protocol ହଉଛି once, first of all, COVID ରେ ମୁଁ ଯେମିତି କାଉନସିଲିଂ ଟାଇମରେ କହୁଥିଲି ଯେ there is no protocol for a doctor to patient relative interaction. So similarly, government has made clear concepts or clear protocols that once there is a death in a COVID, the body has to be sealed in a plastic, specially designed plastic cover. तार कारण होची this COVID virus, when the person who has died of COVID, he is likely to be a harbinger of enough amount of viruses which can get transmitted to the society. So he is basically a carrier. He is like a atom bomb. So once if he goes into the society and people start doing production around him or giving him flowers or garland, he is likely to transmit it in a very bad way. So एई दृष्टिରୁ सरकार एक कानून बनेइछन्ति, एटा केवल भारत नु, एटा पूरा विश्व रे this same rule is applied everywhere. So the problem is we are closing it in a double layer plastic bag. The reason being, आमे से double layer न कले by chance गोटे bag जदि handling कला बेलको फाटी गला बा किछि हला, there is a chance of contamination of the entire surface by means of COVID virus. और तांको बॉडी रो जो secretions अछि, जो कफ अछि, phlegm अछि, blood अछि, सेगुडा everything can transmit. So it is basically to stop this cycle of transmission, जोटा पई कि एई particular rules गुडा तयारी करा हिची.
So I told you that COVID is a very different. It is a different times. It will take us to different a different era. ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ଆଉ ବିନା ବିନା ମାସ୍କ ରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣ ଭୁଲି ଯିବେ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନି ମୁଁ କଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରି ଅପରାଧ କରିଦେଇଛି. So it is like that. So death during COVID times is a very emotional thing. It's more for the people, those who are relatives, those who can't see the face of the dead also. I really sympathize with them. ମାନେ ଏମିତି ହେଇଛି ସାର୍ କି ବାପାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ନିଆ ହଉଛି, ପୁଅ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଯିଏ ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୂରରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନା ମା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରି ମାନେ ଆଗରୁ ଜଣେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଶବ ନିଆ ହଉଛି, ଆଉ ଜଣେ ଅକ୍ସିଜେନରେ ଅଛନ୍ତି. ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଥରିଯିବ. ଆଉ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ. ଆଉ ସାର୍ ଏମିତି ବି ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, ଏମିତି ବି ଇନସିଡେନ୍ସ ଅଛି କି ପେସେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ମାନେ ଆଇସୋଲେସନରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ନାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାର କଲା ଏଣ୍ଡ କୋଲାପ୍ସ. ବାଥରୁମ ଯିବା ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ବାହାର କଲା ଏଣ୍ଡ କୋଲାପ୍ସ. ସୋ କରୋନାରେ ଏମିତି ଅଛି କି କାହାକୁ ବି ଆପଣ ୟୁନିଭର୍ସାଲାଇଜ କରିପାରିବେନି. ନାଇଁ. ଯେମିତି ସାର୍ ଆମେ ପ୍ରିକସନାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଦଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଡିବା ପାଇଁ ଶବ, ସେତେବେଳେ ପୋଡିବା ପାଇଁ ଅପୋଜ କରୁଛନ୍ତି. ହାଉ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍ ଦେ ଆର୍ ସାର୍. ମାନେ ଇଭେନ୍ ଏମିତି ଇନସିଡେନ୍ସ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ହେଇଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନିଆ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପୋଡିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି. ତ ସୋସାଇଟି ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ସୋ ଇନସେନ୍ସିଟିଭ. କୌଣସି ଡେଡ୍ ବଡି ଯଦି ଆମକୁ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାହଉଛି ତ ପ୍ରପର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନରେ କରାହଉଛି. ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଟେମ୍ପର ନ କରିବେ କୌଣସି ଇନଫେକ୍ସନ ବାହାରକୁ ଯିବାର କାରଣ କୌଣସି ମାନେ ପସିବଲ ହିଁ ନୁହଁ. ତ society we should not be so insensitive to these corona patients or corona death कि एमती माने अमानवीय जिनस गुड़ा करिवो. तो सर माने बहुत इमोशनल थिला आज सेशन, आउ बहुत हार्ट टचिंग भी थिला. ऑल्दो वी आर डॉक्टर वी कैन फील द हिट. सोसाइटी तो फील करूची. आकु बहुत खराब समय अच्छी सर. आग पाई सर कौन एडवाइस देबे सर, केमती लोक प्रिपेयर्ड होकर रहिबे এই মানে ମୁଁ କହୁଛି ରାଉରକେଲା ଆମ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆଡଭାଇସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ କି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଗୋଟେ ମାସରେ କଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି. ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ଯୋଉଗୁଡା ସବୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ବମ୍ବେ ହଉ, ତ ଏଇ କରୋନା ଏବେ we are approaching the peak and we are going towards the peak zone ଯୋଉଟା ହବ, and this is going to stay for at least 3 months, 2 to 3 months by all predictions. तापरे किछि समय ପାଇଁ କମିଯିବ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରିସର୍ଜେନ୍ସ ଆସିବା. ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କମନ୍ ଥିଙ୍ଗ which has happened every time in most parts of the world. So ଆମର ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମକୁ ଦରକାର that we should take the disease very seriously. Please don't take it lightly. ଯେ କରୋନା କିଛି ନୁହଁ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କହିଲେ it is a fake, it is a scam, it is a useless thing, ଏଟା ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ସ୍କାମ ଭଳିଆ ଜିନିଷ. It is not like that. The disease is for real and it is here to stay for us till we find out a vaccine or we achieve a community or herd immunity. So a particular time re we should adhere to amaro ketewada basic human principles. Do not travel unnecessarily where you don't need to. Do not go very near to other people. Always maintain social distancing. Wear masks. Do mane basic prone achanti semane tike tankor nijo care nebe. So these are certain basic things which we should ame jodi samaste adhere kariba to amaro mortality bahut kami jibo or people can easily mane part of the disease with a very very mild form of the disease. ସେତିକି ଟିକେ ମୋର ଆଡଭାଇସ୍. थैंक यू सर. लास्ट क्वेश्चन गोटे नवा बहुत इंपोर्टेंट लागुची मते. मनीष जैन पचारछंती सर माय फादर इज 71 year old and having about 100 fever for last 7 days. No other issue is there. Smell and taste is good. SpO2 is 95%, CRP is 2.16. He is taking paracetamol 650, Limsi, Ginkgobit, azithromycin. Sir, please suggest any test or medicine. See, I would suggest since he comes in the very prone zone because your father is an elderly geriatric person, he may be having some comorbidities or some other existing disease. So it is ideal that the problem what will happen is if he has COVID later on or he deteriorates and then we do COVID, it may be sometimes too late to give help to these people. So if you do a test and if you know a known devil is better than an unknown saint, that's a saying.
So if you know that he is COVID positive and you seek medical advice or you keep yourself prepared that if he deteriorates, we are going to go to the hospital, that is actually a better situation for you rather than sleeping over it and then suddenly waiting for him to deteriorate and then taking him to the hospital at the last moment where it will be difficult to make. Here also, I would like to tell you that it is a relevance to this particular question by Mr. Jain that the more later you seek medical care, the more the chances of fatality and the worse outcomes that you are going to expect. Because the basic reason is you are already destroying many of your organs. COVID, the immunity and the inflammatory process of COVID has already started in your body and is going there for quite some time. So in such an instance, more amount of organ damage, more amount of damage has been done to all the parts of your body. So by the time you become bad and you seek medical advice, cure may not be 100% or it may take long time or it may not happen at all. So please seek medical advice as early as you can. Get yourself tested. That is the best way. थैंक यू सर आपण आपणकर एते माने बिजी शेड्यूल मधे टाइम बाहर करके आसिले लोक मानक एते माने डिटेल रे कोरोना विषय रे बतेले आउ या परे मु भाबु जे जते दर्शक एटलीस्ट देखि चंदी से माने हमर मेसेज ता आगो को प्रोपागेट करिवे आउ ए जो माने लाइव सेशन ता अछि आपण यदि शेयर करिया पय चाहंती तो शेयर करि परिबे भलो हबो आउ लास्ट रे मु एथि कहबी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। Thank you.